We have with us Dr. Vinay Nikam, person with many qualifications. He is, मैं पढ़कर बोलूंगी, BE Civil LLB, MTech from Ruraki IIT. He is PhD in environmental studies, and he is also environment consultant. So we are blessed to have with us him today. He'll be talking about Agnihotra and geopathic stress. इनफैक्ट मैं यही जानना चाह रही थी, जियोपैथिक स्ट्रेस इतना भारी भरकम सा टर्म है, इसका मतलब क्या है पहले तो। एंड विनय जी, आपको कैसा ठीक लगेगा? फर्स्ट यू विल टॉक, देन वी कैन हैव द डेमो। कैसे? बिकॉज वी हैव शालिनी जी एंड नवीन जी आल्सो विद अस हु आर हियर टू गिव डेमो। अच्छा, मनीषा ने बोला है कि वो डेमो पहला देना चाहते हैं, तो लेट्स देना चाहते हैं जी, जरूर। शालिनी जी, नवीन जी, प्लीज आ जाइए। या नमस्ते, शालिनी हियर। इंट्रोड्यूस कर सेशंस वाले सारे शालिनी जी को जानते हैं, जो अग्निहोत्रा सेशंस में आते हैं। एवरीबॉडी नो शालिनी जी एंड नवीन जी। दे आर आवर कोर वॉलंटियर्स, दे आर फ्रॉम माधव आश्रम बैंगलोर, बट हमारे लिए ऑलवेज प्रेजेंट टू गिव द डेमो। थैंक यू सो मच, thank you so much, thank you for the appreciation. From Jaipur, the whole family is dedicated for Agnihotra. Anytime, and they are just call away for Agnihotra. It's our pleasure. Thank you so much. जी, so we can start. Okay, so we all know about Agnihotra. कि Agnihotra क्या है? Agnihotra is a simple process which hardly takes 5 minutes for performance, and it is completely based on science and Vedas. पूरी तरीके से science और Vedas पे ये depend करता है, और इसको करने में hardly 5 minutes का समय लगता है। लेकिन आज की basic requirement है, आज अपन जो भी इनटेक कर रहे हैं, whether it is food we eat or water we drink or air we breathe, everything is polluted and poisonous. So this is a simple methodology by which we can protect ourselves and our family members from the ill effects of pollution even. और आज जो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, उन सब से बचने का एक छोटा सा तरीका है, और इसको हम अपने ही घर में कर सकते हैं। जैसे अपन कोई भी प्रोसेस करते हैं, या वॉक करें या योगा करें, तो उससे हम ही बेनिफिटेड होते हैं। मतलब जो भी कर रहा है सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने से घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको इक्वली बेनिफिट मिलता है, और ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वैसे हम सब ऑलरेडी इतने सारे सेशंस हो चुके हैं, तो अग्निहोत्र के बारे में हम सब जानते हैं। तो बस सिंपली आई विल गिव द डेमो कि हाँ अग्निहोत्र किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि इट इज टू बी परफॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसको हम एग्जैक्टली जिस भी लोकेशन में हम रहते हैं, वहां के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे वहां एक ऐप है ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें हम अपनी लोकेशन यदि डालते हैं तो वहां का टाइम टेबल हमारे पास निकल कर आता है। तो उस टाइम टेबल देखिए, जैसे ये जयपुर का टाइम टेबल है, तो ये जयपुर का टाइम टेबल मंथ्स गिवन होते हैं, डेट्स गिवन होती है। जैसे आज 5 जून है, तो आज 7:14 पर जयपुर में सनसेट होगा। तो 7:14 वो टाइम है जब हमें आहुति देनी होती है। अब आहुति देने के लिए हमें जो प्रिपरेशन है वो पहले करनी होती है, इसीलिए इस टाइम से जो हमें टाइम गिवन होता है टाइम टेबल के अंदर, उस टाइम से ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स पहले हम अपनी फायर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जो फायर प्रिपेयर की जाती है, ये पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में की जाती है। तो रीजन बीइंग, देखिए कॉपर जो पिरामिड शेप का कॉपर का फिक्स डायमेंशन का पॉट है, वो इस तरीके का होता है। ये पिरामिड शेप है, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मिस्र के पिरामिड है, वहां पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज भी डिके नहीं हुई है। तो रीजन बीइंग उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी वजह से उसमें एनर्जी होती है, और उस वजह से ही उसमें कोई भी चीज डिके नहीं होती है। और इसको हम जब उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, यदि हम अपने पॉट को रखते हैं, तो उससे जो हमारी कॉस्मोस से ये पॉट जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे घर में डिसेंट्रलाइज करता है, और हमारे घर में एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो इसलिए इसका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि हम इसको पिरामिड शेप के कॉपर के फिक्स डायमेंशन के पॉट के अंदर करते हैं। थर्ड जो प्रिंसिपल होता है इसका, वो ये होता है कि हम इसमें काउडंग केक, जो फायर प्रिपेयर करते हैं, वो काउडंग केक्स की करते हैं। अगेन जो काउडंग केक होते हैं उसमें बहुत ही मेडिसिनल इम्पैक्ट्स होते हैं उसके,
इसीलिए पहले के घर जो हुआ करते थे वहां पे कोटिंग की जाती थी, गाय के गोबर की कोटिंग की जाती थी, जिससे किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता था और लोग हेल्दी रहा करते थे। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल कि इसमें हम काउडंग केक जो सभी जगह अवेलेबल होते हैं, इस तरीके के गाय के कंडे, हम लोगों का जयपुर में गौशाला है, वहां से हम लोग अरेंज करते हैं। तो इस तरीके के गाय के कंडे मिलते हैं पतले पतले, जिसमें कि डस्ट नहीं हो, किसी तरीके की इम्प्योरिटीज ना हो, इस तरीके के गाय के कंडे हम अरेंज करते हैं। ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है हम इसमें राइस यूज करते हैं, अनब्रोकन अनकुक्ड राइस, जो हम आहुति देने के लिए जो हम हमारे घर में जो अवेलेबल होते हैं अनकुक्ड अनब्रोकन राइस, वो हम यूज करते हैं। और गाय का देशी शुद्ध घी, गाय का घी, इन दोनों को मिलाकर हम लोग आहुति तैयार करते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80 ग्रेन्स ऑफ राइस यूज होते हैं एक टाइम के अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस में, और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ काउज घी। मीन्स ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 250 ग्राम्स जो आपका राइस है, इट इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ। और अगर अपन बात करें तो 50 मिलीलीटर ऑफ काउज घी इज सफिशिएंट फॉर 1 मंथ। दैट मीन सिंपली कि इसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और आराम से 10-12 साल का बच्चा भी इसको इजीली कर सकता है, इतना सिंपल प्रोसेस होता है। तो ये हमारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज होते हैं जो आहुति के लिए, वो है चावल और गाय का घी। फिफ्थ जो इसका प्रिंसिपल होता है वो चैंटिंग ऑफ मंत्रास, वैदिक मंत्र को हम चैंट करते हुए हम आहुति देते हैं। तो अब देखिए प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। ये जो अपना पॉट है यूज करते हैं, तो वो यूज करते करते इस तरीके से ब्लैक हो जाता है। हम इसको तभी खाली करते हैं पॉट को जब हमें दूसरे टाइम के अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस करनी होती है। जैसे हमने सुबह किया, तो जब हमने शाम को करेंगे तब हम इस पॉट को खाली करते हैं। सुबह करेंगे तब हम पॉट को खाली करेंगे। इन द मीन टाइम जो ऐश है वो इसी के अंदर मेंटेन रहती है। हम गाय के कंडों के टुकड़े करते हैं, इस तरीके से सेंटर में एक पीस रखते हैं और चारों तरफ हम 4 पीसेस लगा देते हैं। 4 साइड्स के अंदर हम 4 काउडंग पीसेस को हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। और अरेंज करने के बाद हम इसको जलाने के लिए किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे कि हम कैम्फर यूज कर सकते हैं, कपूर यूज कर सकते हैं, या पेड़ों से जो गूगल निकलता है उसको कुंदरुन गोंद जिसको बोलते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट जो कि पोल्यूशन क्रिएट ना करे, उसको हम काउडंग मतलब केक्स को जलाने के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से हमने सेंटर में एक कंडे का टुकड़ा रखा है, चारों तरफ 4 पीसेस रखते हैं, सेंटर में हमने कपूर रखा है, और उसके बाद हम कंडों को पीसेस में इस तरीके से तोड़ लेते हैं और उनको क्रॉस में इस तरीके से अरेंज करते हैं, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और स्मोक जो है वो कम से कम रिलीज हो। ऑल्दो अभी टाइम नहीं है अग्निहोत्र का, लेकिन आपको अभी हम जला के दिखा रही हूँ इस तरीके से। जो भी टाइम गिवन होता है हमारा टाइम टेबल में, उससे करीब 5-6 मिनट्स पहले हम इसको इस तरीके से जला लेते हैं। जलाने के बाद इस तिल्ली को हम बाहर ही रखते हैं। जो मैचस्टिक है इसको हम अंदर नहीं डालते, बिकॉज इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। और इस तरीके से हम कंडों को अरेंज करते हैं। कंडों की हाइट हम कितनी भी ले सकते हैं, लेयर्स हम कितनी भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं होता इसका कि इतने ही कंडे लगाने हैं। इस तरीके से हम ऊपर टॉप पे एक कंडे का पीस लगा देते हैं। अभी हमारी अग्नि तैयार हो रही है। जब हमारा आहुति का देने का टाइम होता है, उस समय ही इस कंडे के टुकड़े को, पीस को हम साइड चिमटे की हेल्प से इसको हम कोने में कर देते हैं, और जो बीच में स्पेस बनती है उसमें हम आहुति देते हैं। इन द मीन टाइम हम क्या करते हैं कि हम अपनी आहुति की तैयारी करते हैं। ये जैसे हमने चावल लिए, ऑलमोस्ट काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 2 चुटकी चावल जो हम 2 बार में आहुति में दे सकें, इतने चावल हम लोग ले लेते हैं। ऑलमोस्ट इतना राइस एक टाइम की अग्निहोत्र परफॉर्मेंस के लिए सफिशिएंट है। ये हमने राइस लिया, और ये जो काउज घी है इसमें हमने फिंगर डिप किया अपना। स्पून यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना घी जो होता है एक बार की अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस के लिए सफिशिएंट होता है। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और चाहें तो हम रैंडमली भी आहुति को पिक कर सकते हैं। जितने भी लोग घर में हैं जो भी अग्निहोत्र कर रहे हैं, आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है। और मंत्रोच्चारण घर में जितने भी लोग बैठे हैं, मतलब वहां पे जितने भी लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण सभी करते हैं, लेकिन आहुति सिर्फ एक ही जने को देनी होती है। इस तरीके से जैसे ही हमारा टाइम होता है एग्जैक्ट हमारे टाइम पर, उससे हम 1 मिनट पहले करीब इस तरीके से इसको साइड में कर देते हैं, और जो बीच में स्पेस हो गई है इसमें हम आहुति देते हैं। लेकिन हमें जो आहुति होती है वो हमें एग्जैक्ट टाइम पर ही देनी होती है। उस समय अग्नि की सिचुएशन जो भी हो, अग्नि बहुत ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कम हो गई हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी सिचुएशन है हमें उसी सिचुएशन में आहुति देनी होती है। सपोज हमारा एग्जैक्ट अभी जैसे आज जयपुर में 7:14 का होता है, जैसे ही हमारा 7:14 होगा
तो हम मंत्रोच्चारण करते हुए आहुति देते हैं। देखिए जैसे सुबह के जो मंत्र हैं वो इस तरीके से हैं, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। ये जो 2 बार स्वाहा आया है, उन स्वाहा पे हमें आहुति देनी होती है। इस समय मैंने अभी आहुति नहीं दी है, अभी हम शाम के मंत्रोच्चारण करेंगे और शाम के मंत्रोच्चारण करते हुए हम आहुति देंगे। तो शाम के मंत्र इस तरीके से हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अग्निहोत्र की विधि जो होती है वो अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस इतनी ही होती है, लेकिन इससे जो गैसेस बनती है, क्योंकि अग्निहोत्र की परफॉर्मेंस करने से 4 तरीके की गैसेस निकलती है और ये जब हम थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करती है। तो इसमें जो गैसेस निकलती है उसमें से एक गैस होती है फॉर्मल्डिहाइड गैस। उसका केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, जैसे अपन चावल लेते हैं तो चावल का कंपोजिशन जो होता है वो होता है मॉइस्चर एंड स्टार्च। तो मॉइस्चर यदि अपन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले इट इज H2O। तो जब आपके गाय के कंडे इग्नाइट होते हैं, जलते हैं, तो उसमें लिटिल बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम इट, and when carbon dioxide and H2O reacts together it gives HCHO and O2. So HCHO is the formaldehyde gas which is being used by the doctors to sterilize their instrument before any of the operation. तो इस तरीके से जो भी हमारी जो गैसेस निकलती हैं उस गैस में से एक गैस होती है फॉर्मल्डिहाइड गैस, जैसे मैंने आपको बताया। ये गैस हमारे घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को खत्म करती है और इसीलिए क्योंकि जब हमने सुबह अग्निहोत्र किया तो सुबह ये गैस बनती है, शाम को अग्निहोत्र किया तो शाम को बनती है। तो इस तरीके से हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन खत्म होता है और हम लोगों की इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्ट होने लगती है, जिससे हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस बनती है, जो O2 बना, दैट मीन सिंपली ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसको अपन सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स के ऑक्सीमीटर जो आता है उससे अपन मेजर भी कर सकते हैं। अग्निहोत्र करने से पहले अपन मेजर कर सकते हैं, अग्निहोत्र करने के बाद मेजर कर सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली सप्लाई होती है तो हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है और जिससे हम हेल्दी रहते हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल सा साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारी घर में खुशियां ही खुशियां लाता है, ऐसा हमारा खुद का अनुभव है। और शायद इसीलिए लास्ट 37 ईयर्स से हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आए हम उसे एटलीस्ट इस टॉपिक से अवगत कराएं कि हाँ ऐसी एक चीज होती है जिसे आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Shalini ji. Thank you very much, the whole dedicated family for Agnihotra. Thank you. जी, Vinay ji, we can start with you, please. Yes, Shalini ji, thank you very much for nice demonstration. अच्छा लगा. So I will share my presentation. आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, enable करना पड़ेगा sharing. अभी तक हुआ नहीं है. Pooja, are you doing or should I do? Pooja, should I do? मैं reclaim host करके करती हूँ. I'll be doing it. Wait for him. मैंने विनय जी को होस्ट बना दिया, को होस्ट. You can do the screen sharing. Yeah. I hope screen is visible to all of you. Yeah, yes. I am also audible. Yeah.
Good evening, all of you. Namaste. This is Dr. Vinay Nikam. पूजा जी ने इंट्रोडक्शन कर ही दिया है. So first of all, happy World Environmental Day, and today's theme, this year's theme is only one world, and I like the slogan of Puja's organization. It's Mitti Connect, right? Better, and it's in line with this year's theme of Environmental Day, only one world. So if you're connected, really connect to the Mitti, then you can understand the importance. So today morning we had a very nice tree plantation drive, and where a lot of kids gets involved. The concept was only to get the kids connect with the mitti. Okay, क्योंकि आजकल अर्बन सिनारियो में नहीं होता है मिट्टी से कनेक्ट, राइट? सो good thing, a good initiative. Thanks to organizers for giving me opportunity to present on this little bit different topic, but it's very connected to all of us. Let's explore next few things, and of course start पे guru mantra already हुआ है. So without guru mantra, without guru's ashirwad, we are nothing, right? So whatever I'm presenting today, it is because of several gurus who has nurtured me over period of the time, and even now they are nurturing me. So it is all because of guru. This is a nice view of from our hall. Okay, so you must have witnessed sometime, right? And ever you have feel that uncomfortable when entering the building of premises. कभी ऐसा होता है, कुछ बिल्डिंग में हम एंटर करते हैं या कुछ घरों में एंटर करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. कुछ जगह पे ऐसा होता है कि डिस्टर्ब स्लीप होती है, मतलब प्रॉपर नींद नहीं लगती है. इवन हमारे रेगुलर घर में भी कई जगह पे हम ऐसा फील करते हैं कि नहीं, उस लोकेशन पे अच्छी नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों. ऐसा होता है कि कभी कभी सडनली हम जब जगह चेंज करते हैं, वी फाइंड द सीरियस सिकनेस. ओके, द हेल्थ प्रॉब्लम्स मूविंग टू द न्यू होम. एक मैंने कहीं जगह पे देखा है कि जब लोग नए घर में जाते हैं, और ऐसा जरूरत नहीं हो जगह पे, नए वर्क प्लेस पे थोड़ा सा वो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स फील करते हैं. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने जमाने में डॉक्टर्स बोलते थे अगर आपको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम्स है तो गांव में जाओ या कहीं दूसरी जगह पे जाओ, चेंज द प्लेस सो यू विल फील द बेटर. नहीं तो वर्क प्लेस से थोड़ा वर्क प्लेस चेंज करो. तो ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे. So we all educated about the electromagnetic fields, the EMF, and the dangers of the cell phones, dangers of the computers, microwaves, cell phone towers का dangers मालूम है, Wi-Fi का. मैं क्या आजा ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦਾ ਹੈਗਾ. ਹਾਂਜੀ सुमेत पापा ने भेजे. विनय जी आप होस्ट हैं तो यू कैन म्यूट देम. अभी वी आर द होस्ट, आपको म्यूट करना. I think they have muted. So we know all the dangers of the electromagnetic field. In fact, we do check the EMF with this kind of the instruments. Okay, these are more of purchase for the only for the research purpose, right? तो ये हमें पता है, right? So इसके अलावा कुछ रेडिएशंस हैं जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, ये हमें जानने की कोशिश करेंगे. So it is because of the earth radiations, which is commonly known as a geopathic stress, right? So what do you know about geopathic stress? जैसे पूजा जी ने बोला था कि ये टर्म काफी बड़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे आज समझने की. So let's understand. So geopathic stress is one of the most overlooked natural hazard. Basically, it's a natural hazard है. So geo, अगर हम इस टर्म को दो हिस्से में बांट देंगे तो जियो means earth, right? And patho means the suffering. So it is a disease of the earth. So what is meant by the disease of the earth? Okay, so geopathic stress is a general term for the energies emitting from the earth that causes the discomfort and in health for in human being. And since it has a negative impact, because at the end of the day it affects the immune system.
So जैसे कि अर्थ है, अर्थ इज एक्टिंग एज अ मैग्नेट इन द यूनिवर्स, राइट? So अर्थ के सेंटर में देयर इज अ लावा. जैसे अर्थ घूमता है, so जैसे अर्थ घूमता है जनरेट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, बिकॉज लावा भी घूमता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स आर शूट्स अप इन द एनवायरनमेंट थ्रू द जियोलॉजिकल फॉल्ट्स. ये जब आप नीचे फिगर में देखते हैं, देयर इज अ टेक्टोनिक फॉल्ट. टेक्टोनिक फॉल्ट नथिंग बट जब अर्थ फॉर्मेशन होता है तो उसमें गैप्स है, दैट वी कॉल एज अ जियोलॉजिकल फॉल्ट्स. थ्रू दिस जियोलॉजिकल फॉल्ट्स this radiation shoots up in the environment, okay? एंड उसका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि 2 फीट से 200 फीट वाइड तक होता है. कई जगह पे हम जाते हैं, हम मेजर करते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी है, तो लगभग कुछ जगह पे 2 फीट होती है, कुछ जगह पे 10-10 फीट होती है. माना कि पूरा उनका बेड या हॉल पूरा ही उस चौड़ाई में आ जाता है, ओके? और उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट 0 फीट से 30 फीट 1000 तक है. मतलब ऐसा है कि आप कौन से भी फ्लोर पर रहो, आप ग्राउंड फ्लोर पे है या मे बी 100 फ्लोर, तो इसका इफेक्ट आपको होता है. So what are the various sources of the geopathic stress? The first one is the earth magnetic field, then another is a water path, third is a redundant gases, and the fourth is a man-made interference. आज की तारीख में man-made interferences काफी है. We are exploiting the earth like anything. ये मैंने बताया था कि अभी जस्ट बताया कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के लेविटिक मूवमेंट से कैसे हो जाता है. एंड माइंड इट, ये जब शूट होता है, इट कम्स अप लाइक अ लेजर बीम, जैसे से एकदम सीधा जाता है. कहीं और कई लोग बताते हैं कि उसके, जब मैं रेमेडियल मेजर्स में आऊंगा तब बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स, कौन कैसे उसको ले लेते हैं द इम्पैक्ट. But for your information, it shoots up directly like a laser beam upwards. Okay. So this is a very nice figure. So this person is sleeping here in the bedroom. Okay. And from the bottom of the earth, there is a earth radiation which shoots up. Okay. Like this. So because of this earth radiation, that poor fellow is having the disturbed sleep. Okay. Then another source is a water path. जैसे कि हमारे rock में से there is a water flowing to the rock fractures, right? So when the water is flowing to the rock fractures, again generates a electromagnetic field, and this electromagnetic fields again shoots up to the rock fractures. Okay, this is one thing. Another thing is that if these 2 water fields which crosses each other, that particular location is very harmful. It is very harmful. Okay, जब हम बताते हैं कि या वाटर डिमाइनर्स जो होते हैं, दे डू फाइंड द वाटर पाथ, राइट? वाटर पाथ फाइंड आउट करने के बाद वो वहां पे बोर का लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? नथिंग, वो क्या करता है, दे फाइंड द वाटर पाथ. इट मींस व्हाट, जहां पे वाटर पाथ है उसके ऊपर जो भी कोई रहता है उसको कम अधिक मात्रा में रेडिएशन का इफेक्ट होगा, राइट? कम अधिक मात्रा में रेडिएशन इफेक्ट होगा. लेकिन जब 2 वाटर पाथ एक दूसरे को मिलते हैं, दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज अ गुड लोकेशन फॉर गेटिंग द वाटर सोर्स, राइट? जब हम फील्ड पे जाते हैं, वी डू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ लोकेशंस, क्योंकि दैट्स अ 2 वाटर सोर्सेस मीटिंग ईच अदर, राइट? सो दैट्स अ गुड वाटर सोर्स. सो ये व्हाई आई एम सेइंग दिस ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑलरेडी कई जगह पे ऐसे होता है कि वाटर डिमाइनर्स को बुलाया जाता है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन फॉर द बोरवेल. तो उसी समय इनडायरेक्टली ये स्टडी हो जाता है कि कहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस का लाइंस है. दिस फॉर्म्स अ गाइडलाइन कि वो आइडिया मिल जाती है. सेकेंडली, इफ यू कनेक्ट टू द वास्तु, कई जगह पे बोलते हैं कि नहीं, वेल के इस दिशा में मत रहो, इस दिशा में अगर रहेंगे तो हेल्थ को हैजर्ड होगा. तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? व्हाई इट इज गेटिंग द हेल्थ हैजर्ड? बिकॉज कि वहां से वाटर पाथ जा रही है. Since there is a movement of the water path, because of that it is affecting, because of the geopathic stress, it is affecting to your health, right? This is a scientific reason behind why in the Vastu people do say, okay, यहाँ bore के या well के यहाँ पे कौन सा, I don't follow the directions of the Vastu, okay, but इसके नजदीक घर नहीं होना चाहिए या बेड नहीं होना चाहिए. Okay.
Another thing is that अगर हम water path की बात करते हैं तो water path is a varying depth है. So ऊपर से 60 feet तक अगर water path है वो इतना that is not a harmful, but the water path between the 60 feet and the 60 meters and the 90 meters below the surface, that is harmful to the us. Okay. The third source is a radon gas. Okay. So Sorry, the earth. Dr. Vinay, I have a question here. Can Yes. I ask or afterwards? Yeah, we can take the questions at the end. Is it okay? Right. Yeah, fine. We can note down. We can take the questions at the end of the sessions. Okay. So third source is a radon gas. So Earth's natural background radioactivity is concentrated along the certain geological faults, mineral veins, and the water bearing fissures. So geopathic stress theory is primarily concerned with the radon 222. Since in the mid 1980s, US Environmental Protection Agency and the UK Radiological Protection Board, they do conduct the national survey for identification of the radon levels in the house. And what they have found that in the UK, the 90,000 homes contain the air contaminated, means their homes are affected because of the radon gases. And there is a statistics that 1 in 8 American homes, people were breathing the air dangerously contaminated by the radon, right? Then the lastly that even because why this is happening, because everything is a glazing and all. And mind it, our workplaces are like such. We are working in a very close environment where there are the centralized AC at the certain places. So at that particular places, there's a possibility for having the more and more radon gases. Okay, this is what the observation in the US and the UK. That's why this is all linked with the Agnihotra. How जैसे कि शालिनी जी ने पहले बताया था कि अग्निहोत्र से कैसे इसका impact कम हो जाएगा, right? On the last and most important here is a man-made sources, right? So deep foundation, क्योंकि हम इतने especially the Mumbai areas में, even the Gujarat, Ahmedabad, the metro cities में, we are going for the deep foundations because we are going for the very high-rise buildings. Once we are going for the high-rise we are going very deep into the soil, right? कई जगह पे the -6 मतलब 6 level के basement ground के नीचे है. So that much we are doing the excavation, that much we are affecting our mother earth, right? So the basements another second, the tunneling. Tunnel जैसे कि हम tunnels करते हैं, the metro lines and all, it also affect the natural rock structure. Okay, और mind it, जहाँ पे हम tunnel कर रहे हैं, जहाँ पे basement है, वहाँ पे अगर geological fault है और वहाँ से अगर ये radiations ऊपर आते हैं तो it's get distorted. Okay, and because of distorted impact, उसका distortion की वजह से उसका impact ज़्यादा हो जाता है. So underground transport system, that's a metro. So it has been observed in a UK. So wherever there are the metro systems, the building adjoining the metro systems, many people are affected because of the geopathic stress. So this is a very alarming situation in case of the Mumbai when there is a work of the underground metros are going on. Okay, then the quarries, right? So wherever the quarries, the adjoining areas, there is even the areas above the quarries are affected because of the geopathic stress. Okay, so this is a very simple schematic of structure where the geopathic lines are passing below the house. Even the geopathic lines are passing across the road. It has been observed in Pune. There is one good research group in Pune who is already working on the geopathic stress, especially on the areas of the accidents. Okay, so what they have observed that wherever there is a geopathic line which is passing through the roads, okay, at that particular portions of the highway, they are much prone for the accidents. Okay, they are scientifically proved why it is happening, right? Then you might have seen that the extreme left, you can see the trees, okay, with a swollen thing. Okay, that is nothing but a tumor to the tree. Okay, so if you see that particular tree or location, so that tree is affected by the geopathic stress. Okay, yeah. So this is what is a typical
urban building or any building, what I do I should call it the urban building or any building. So on the underground there is a water path. So area above the water path is affected because of the radiations. Okay. Apart from this, the Earth has a very natural geomagnetic grids. Okay, and these grids are from the north to south and east to west. And mind it, from these grids, very strong radiations comes up, especially in the midnight from the 12 to 3 a.m. right, and it is weakest during the 5 p.m. and they are influenced by the earthquakes, weather conditions, and are weaker in the fog. Let's understand this. So, what is the impact? What is the impact of these grid lines? It increases the positive ions. This is again linked with the Agnihotra. We'll discuss. So keep it in mind, because of this radiations, there are more and more positive ions. Then it creates a differences in the blood sedimentation rate and increase the gamma radiations. I got an instrument by which I do measure the gamma radiations. Then a lot of research has been carried on in this particular area. So there are different kinds of the grids. The first grid is the Hartmann grid, another is a Curry grid, and the Ley grid. Okay, let's understand this one by one. Okay, so this Hartmann grid was identified by the Dr. Hartmann. Basically, he's a German, is from the Germany. He's a medical doctor and geobiologist who discovered this grid. Okay, so there is a mystery how, because being a doctor, why he has searched all these things, because he has found that there is a certain linkage between the geopathic stress and the patients which he was observing. Okay, which he was treating rather. There was a long drive in Germany. So at certain areas and certain locations, so many people were affected because of the cancer. So there was a mystery why at that particular location people are affected because of the cancer. So luckily at the same instance, there was a hydrogeological exploration was going on for the infra projects, where they found that there is a certain geological faults. So then the Dr. Hartmann connected, then carried out the further research, and then he found that because of the geological faults, these radiations are coming up, and the people who are residing there, they are affected because of these radiations. Okay, this is how he linked up. And then further he found that basically these grid lines are oriented from the north-south direction at a 2-meter intervals. So everywhere there is a grid lines. Okay, and 2-meter intervals from the north-south, and 2.5-meter intervals from the east to west direction. Another thing is that all these 2-meter, but 2.5 meters are not important to us, but there are certain double grid lines or knots. We call it as a knots. So there it is happening at the interval of a 35 meters, right? So every 35-meter interval, there is a very serious line which is passing through the earth, which is affecting, which are emitting the radiations. Okay, and again, when these two grid lines intersect each other, then it's a harmful to the health. So similarly, Dr. Curry identified the grid lines, but he's identified the grid lines in the diagonal directions. Okay. Then another, there is a ley lines. So ley lines are the natural lines which is passing to the earth. Okay, and if you see this image, so there is a natural ley lines which is passing from the north to the south. Okay, and if you see here, there is a all important temples like a Kedarnath, Kaleshwaram, Chidambaram, and the Rameshwaram, which are on the same line, right? These are all formed on the ley lines. Okay, so there is a definitely connectivity between from the north to the south, right? Another thing is that because this is all the scientifically based, so and everything is given in the very good literature. Okay,
So I have found in a Mansur literature, which is which is published in the 6th and 7th century, and it comprises of the 5,400 verses and organized in totally in 70 chapters. Okay, so where the guidelines, they have given the guidelines. Basically, it is best for the architecture. So they have given the guidelines. The structures should be parallel to the north and south or east or west. Okay, so that's why if you see the structure here or a plot or layout. So if this building is perfectly to north and south in a grid lines, east-west grid lines, so it is called as a Shuddha Prachi. So this is term they used to have a Shuddha Prachi. With a little bit inclination, it is called as Isa Prachi. Okay. And if you see, then I started looking after the old temples, right? This is Somnath temple. The Somnath temple is perfect, the Isa Prachi, right? So they were very much clever, right? Because you know why? If you align yourself to these natural grid lines, you will take the much more advantage of this natural grid line. Because mind it, all the radiations emitting from the natural grid lines, all the radiations are not harmful. Okay, there's a certain positive energy radiates, especially in the morning time. So that's why the Brahma Muhurta, morning time जब हम उठते हैं या 5 या 4:30 या 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, जब when we sit in a particular position, particular direction, we get a very nice energy. That's a natural telluric energy which is coming from the earth, right? So same advantage hota hai. Abhi, if you see the Somnath temple, it is perfect Isa Prachi, right? Then the Raigad fort. See, the old people, they were very, very clever, right? Perfect building ka orientation वैसा ही है. Then the Shivaji fort, perfect. Then the Tirupati temple, little bit inclination, but mind it, इसमें भी science है. If you have a little bit inclination, it will have a monetary gain. You believe it or not, but it has a certain monetary gain, and the Tirupati temple is the best example of that. So if you want, if you want to have a new construction, so is this so tilted with a certain degrees, okay, and then you'll definitely will have a monetary benefit. And this I've seen for the so many structures, like a corporate people, corporate buildings. Once I've been to the Hiranandani house. If you're from Mumbai, everyone knows the Hiranandani. It's a big construction house. Okay, so and what I found, all the buildings in the Hiranandani, that particular head office and the adjoining areas are perfectly with a little bit inclination. That's the Isa Prachi. Okay, with little bit inclination. Then I discussed with Mr. Niranjan Hiranandani, the boss. Okay, so sir, all your buildings are little bit inclination, maybe by fluke or maybe the accidents, but all people, all corporates having setting this building are doing very well. So this is something you are getting the very good monetary benefit. This is a natural benefit, okay, natural earth's benefit which they are getting, right? So then he said, yes, I know. So all the buildings in this particular line, they are performing well. ऐसा कभी होता है, देखिए, if you visit at certain places, एक लाइन होती है, एक स्ट्रीट होता है जो परफेक्ट बहुत अच्छा पैसा बनाता है, राइट? ओके, बहुत अच्छा business is there. Okay, so as a curiosity, you can even check उसका angle क्या है, उसका orientation कैसा है. Okay, then not only in the Hinduism, but also this is from the Makkah Medina. This is also again perfectly into the north-south direction, Isa Prachi, right? Then the Taj Mahal is also into perfect Isa Prachi. Then your Haji Ali Dargah is also perfect. So they have taken the benefit of the national earth. Okay. Then this is Ajmer Dargah. Okay. So ancient people have planned, okay, the structures accordingly. Okay. And the Roman also oriented all the buildings in their villages, towns, and city with respect to the BEM. BEM nothing but bioelectromagnetic fields. Okay, bioelectromagnetic fields is nothing but these grid lines. If you align your things with north, south, east, west,
then perfectly, this is a natural grid lines. Okay. This you must have seen the uh, at certain places. Okay, so this is a manhis megaliths is dotting the surface of the earth from far east of the island. The built were 4,000 years ago. Okay, and this specifically stones are located at such a negative energy points where there is an intersection of it two grid lines. Okay, at that particular location, these stones were laid, and it is believed that this stones laying of the stones has reduced the negative energy. Okay. Then we need a holistic planning so that our health should be protected. Let's understand the history and the background of the geopathic stress. So 4,000 years ago, Chinese knew the harmful effects of the geopathic stress. In a Feng Shui, Chinese called a geopathic stress name as the vents of the dragon and the claws of the dragon or the dragon lines or underground demons, and avoided buildings, houses on the stressful places, right? The Chinese Emperor Huang Wu proclaimed and edict, and effectively to this day, which reads like a no dwelling shall be built until the earth diviners have confirmed the intended building site are free from the earth demons. मतलब चाइना में 4,000 साल पहले से ये है कि ऐसे पूरा properly they should do the survey, and after doing the survey only they should construct the building. Okay. In ancient India, would test the area's new building by allowing the grazing of the cow. मतलब वहाँ पे पहले कैसे होता कि cow को एक करो grazing करो, अगर 3 months में उनको कुछ problem नहीं होता है, that's the best site for the residing. Okay. So ancient Romans would test the areas for the new building by allowing the sheep to graze. Okay. So every country has their own methodology for doing the soil investigation or doing the soil testing. So let's understand the professional research into this field, right? So the first study was carried out in Germany in 1920s, okay, by von Pohl. So it's what he has studied. There's a 90% of all the cancer cases has a connection to the geostress. Okay, then Dr. Hartmann is a German medical doctor, geobiologist. He concluded the cancer is a disease of the location. It should be noted that cancer is disease of the location. I'll cover in this in a case studies how I have detected as well. Okay, so the Dr. Curry, German-born American scientist, physician and medical doctor, and the biochemist, searched several houses where the cancer patients have previously lived. Okay, Dr. Otto, the professor at the University of the Vienna. So they formed a group in the Vienna. So they carried out the two years very extensive research in this particular field, where 4,62,000 measurements were done and 6,942 tests were carried out. So he found that the geopathic stress affect the blood sedimentation, the blood pressure, blood circulation, heartbeats, breathing effects, then skin resistance, the electrical conductivity of the muscle points. Okay. Then the World Health Organization, they have also studied and found that 30% of the office, hotels, and institutions are in they're given in the terms as the sick building syndromes. Okay, so 30% buildings are the identified as sick building syndromes. Then in Austria, bachelor, she surveyed the 3,000 apartments and over 11,000 people, and discovered that 100% correlations between the geopathic stress and the 500 cases of the cancer. And Mr. Melvin Kelvin, the American Nobel Prize winner, he also studied the effect of the geopathic stress, and he studied along with other things the effect of the carcinogenic tar on the skin of the hamsters, and found that the hamster did not develop cancer as anticipated until they were kept in a geopathic stress places. Okay. Then the Dr. Veronica, she was the wife of former German president. Healing of
700 terminal cancer patients after they relocated their beds to an area. Here I will share one of the case when this is the very first case which I detected. Okay, so I started this study as a passion, right? So very first case when I visited, I was called by one royal family, the very rich family of the Mumbai, to check their place. Okay, so they didn't inform what happened to them. Okay, in fact, they were the one of the trustee of the Hinduja hospital. Okay, so they called me and they said, okay, do your testing. Okay, then I studied. Okay, so it is a very acid test for me, being a first thing. Then I said, okay, the radiation's magnitude as such that it is affecting. It will result the diabetics followed with the cancer. Okay. Then suddenly she said, yeah, you are right. My mom has been detected earlier with the diabetics and now she is detected with the cancer. That will last stage. Then what happened? Then we looked another places where there is no radiations. Okay, and mind it that the age of that particular lady was 76 with a high last stage cancer was detected. And then we relocated. We immediately relocated her to the place where there is no radiations. Okay, and mind it, since they were doing the cancer treatment from their own hospitals, after reshifting to the non-radiation place, the her response to the cancer treatment was much improved. Because you know what happened, it was very much touching, because every time I share this case, because that's very touching to my heart, because it's a third stage cancer and her husband is of 82 age, and we sat down in the hall and he said, okay, Vinay bhai, kya hoga, kaise hai? Then I said, let's we change the place. And he could just put his hand on my shoulders. See, doctors have given the hope, and they said, okay, call all the relatives. So we are calling the relatives, and it's the last stage. Then I said, okay, let's keep a hope. We will change to the non-radiation area, and let's see what will happen. Then 2 months back, after 2 months, they called me, and that particular lady was literally walking. Okay, so that was the best part. After shifting to the another places, non-radiation places, she recovered very well. Okay, of course her age was 76, and she survived for the 2 years after that. Okay, that's the best part because of non-shifting. Mind it, ये इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा बोलना है, अगर यही बात उनको अगर कैंसर डिटेक्ट होने से पहले पता होती तो कैंसर ही नहीं होता, राइट? उनकी इम्यून सिस्टम ही नहीं खराब होती थी, राइट? तो अगर नहीं तो फर्स्ट स्टेज में ही पता होता तो उनकी लाइफ बढ़ जाती थी, राइट? सो सेम इज ऑब्जर्वेशन विद दिस डॉक्टर वेरोनिका. सो माइंड इट, अगर ऐसे कोई होता है, आप इफ यू डिटेक्ट एनीवन विद दिस, पहले जमाने में बोलते थे जगह चेंज करके देख लीजिए, लेट्स सी. सो नाउ वी हैव टू एडवाइस, ओके, थोड़ा सा जगह चेंज करके देख लो. Okay. Then Rolf Gordon, he's in fact I'm working on the same line. Okay, Rolf Gordon. Okay, then he's from England, and he spent 24 years of researching why people get the cancer. Don't get panic. Don't get panic with it, because I'm repeating the cancer. Don't get panic. No need to panic. Okay, okay. मन चंगा तो सब चंगा. माइंड में एकदम स्ट्रॉन्ग करो, कुछ होने वाला है ही नहीं. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. सो के फॉरगेट इट. बट नेग्लिजेंस भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है. सो कोरिलेटेड द कैंसर विद लंग, breast and cervix with a geostress in 90% of the cases. मैंने भी काफी केसेस देखे कैंसर के. मेरी 15 दिन पहले एक जगह पे गया था, अच्छी खासी फैमिली, 5 साल पहले उन्होंने नया घर लिया, वहां पे शिफ्ट हो गए, and then they see now suffering with the cancer. Okay, ऐसे काफी diseases है, not only the cancer. Okay, then I checked the bed, then the bed was particularly affected by the geopathic stress. Okay, and पीछे 5 साल से बेचारी वो लेडीज वहां पे सोती हैं. So it has affected her health, right? Then the next is the Dr. Paul, another researcher, cancer scientist, who again discovered the link with the geopathic stress. And
Dr. Rudolf Kessler, he's a naturopath and a geopathologist, demonstrated that the chronic and recurrent disease having a direction correlation to the presence of the geopathic stress in the bedrooms. Okay. Ravi Vaidya is my guru. Thank you, Raviji. He's from India, so he identified the geopathic stress wavelength of various magnitudes. So research of 25 years, and he's visited more than 2,500 household surveys and demonstrated the impact of the geopathic stress on the health. So, lot of what I mean to say, a lot of research has been carried out in this particular area, right? Then this is a very good research by the Professor Hans Snipper, who is an MD, then the world-renowned and widely respected cancer specialist who operates one of the largest MS practices in the world, says in a book, Revolution of the Technology, Medicine and the Society. According to the studies I have initiated, at least 92% of all the cancer patients I've examined have remained in a long periods of the time, especially in respect of their sleeping tests, in a geopathic stress zones. And 75% of the multiple sclerosis patients are geopathically stressed. Okay, the cancer is a disease of the location. Mind it, he has mentioned the cancer is a disease of the location, and how become widely accepted among the cancer specialists in the Germany and other European countries. Right. So, on the advice of the geobiologist, patients regularly move to their beds to the safer position where necessary. This is what we did in that particularly the old case. So, even in the British preconception care organization, here this is a very good thing. Okay, so there they have, okay, if someone wants to get the conceived, it was advised by the gynecologist. Okay, look, now you want to get the conceived, please do check whether you are residing in the geopathic stress zone or not. I will share one case study here. एक फैमिली थी, शादी होने के बाद 5 years they were struggling hard for getting the baby, right? So काफी उन्होंने डॉक्टर्स के पास गए, काफी ट्रीटमेंट किया, they went to the mirrors and the long places, but nothing happened. So when, as a curiosity, because he was an engineer at one of the site where I used to visit for my professional assignments. So he used to know that I was doing this kind of the studies. So just curiosity, उसने मुझे बुलाया. I went to his home. मैंने देखा कि क्या है, तो उसका bed was totally affected by the geopathic stress. And mind it, फिर उसको we are given the certain remedial measures, and we also do check the dowsing. Dowsing से पता चला कि yes, there is possibility, क्योंकि जहाँ पे radiations है, especially for the ladies, it's difficult to get the consult because of the lot of hormonal changes happening. Okay, then it was known कि मुझे पता था, I was damn confident कि मुझे कि आगे जाके कंसीव होगे and baby होगा. मैंने उनको उसी समय बोला कि देखिए sister, you will get conceived and I should get a good news within a year span. Okay, and after that I was waiting. After 6 months or 8 months, I was waiting. अरे अभी तक news क्यों नहीं आया? Then I heard, okay, she got the conceived, and after 1 year baby हो गया. Okay, there are certain cases. So law बहुत ऐसे cases है कि जो there are certain cases of the miscarriages even by the gynecologist. मेरे सर की very good case study है. The gynecologist, the both doctor, husband and wife, the both doctors. The wife is a gynecologist and the husband is a heart surgeon. Okay, and 3 times miscarriages, and then finally someone said, okay, show it to the Ravi Vaidya, and then Ravi Vaidya went to their place and they found that okay, the bed portion, particular bed portion is all the radiations, and the portion where her husband was sleeping, especially the heart portion, there was again the very strong magnitude radioactive wave was passing. Okay, then उन्होंने curiosity पूछा आपके husband कहाँ पे है? Then she said okay, कल ही उनको थोड़ा सा heart का problem है, then he is under treatment, and then he said okay, don't worry, you relocate your bed location and everything will get solved, and that particular lady she got the baby after that. Okay,
So there are several case studies है. Even my home, right? जब मैंने study चालू किया तो मेरे घर पे मैंने देखा कि नहीं जहाँ मेरे बेड में there are radiations थे. Especially बेटा जहाँ पे सोता है there was a brain hemorrhage wave. So तो आप सोचिए मुझे कैसा लगा रहेगा कि अरे नहीं मेरा बेटा जहाँ पे सोता है वहाँ पे ब्रेन हैमरेज की वेव है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा. एंड जहाँ पे वाइफ सोती थी देयर वाज अ डायबिटिक पेन. ओके एंड बकायदा उसको शी स्टार्टेड विद थायराइड्स राइट. So she was under treatment of the thyroid. Then luckily we studied all these things. Then we relocated our bed and her thyroid, the response to thyroid was good by the medicines and immediately within 6 months uska thyroid chala gaya. Okay, thanks to medicines, but recovery was after the relocating was good and there is no diabetic, no nothing. There is no thyroid, no nothing, right? So just by relocating the bed, it happened, right? So Germany and Austria, the sponsored funding projects are there on the geopathic stress. Germany, they are working a lot on the geopathic stress. The school children are advised to relocate frequently their positions in the school. That's a good move, you know. If there is a particularly one row is affected, then it's better to relocate them every after week or every after month, right? Even in my son's school, they keep on changing the benches every week. So Germany, UK, Australia, Switzerland, France, Netherlands, Belgium, Scandinavia, Americans are aware of the geopathic stress. Okay, even Indians were aware before a British period. Okay, so impact of health on is affect the immune system, ability to fight the virus and bacteria. So I always say it's health is affected by the three pillars. There are three pillars of health. One is a geopathic stress, another is a prana, and third is a acid alkali balance of the food. Okay, so one pillar is a geopathic stress. This we are dealing today. Okay, there are various list of the harmful wavelengths like a diabetes, pancreas, cancers, serious illness, brain waves, inflation of the nervous system. The list is long. Okay, there are various stages of the geopathic stress. Okay, I'm not a doctor. Okay. But I will try to explain how it's affected. Okay, so those who are doctor, I think even my sister, Manisha, forgive me if I'm doing some mistakes, if I spell something wrong, okay, or something. Even there is, I think 2-3 doctors are also attending. Okay, so I will explain in a very simple thing how it's affected with the body health. Okay, there are several million neurons. There are several million neurons. And some neurons are called as neurotransmitters. Okay, so there are 2 neurotransmitters which I know, which are key. That's a GABA, that's a gamma aminobutyric acid. Okay, and what is the function of the gamma? Is to keep you calm down. Okay, so if a person is a calm down, it means his gamma is working very well. But if he's disturbed, it means his gamma is not working well. Okay, this is what I understood. Then another neurotransmitter is serotonin. The function of the serotonin is secretes a chemical is known as a melatonin. Okay. What is the function of the melatonin? It acts as antitoxicants and it also acts as a anti-cancers. Okay. So the person who is affected by the cancer, it means there is something disturbance with his melatonin. Okay. Apart from this, there is a good connection between the bottom of the brain. There is hypothalamus. The hypothalamus to the spinal cord is connected to the adrenal medulla, which is located on the top of the kidneys. Okay, so adrenal medulla secretes the chemical known as cortisol, and the function of the cortisol is to act as a marshalling for the kidney, heart, secretion of the diabetes, secretion of the glucose, then your digestive system, then the hormonal changes. Okay, all these are being marshaled by the cortisol. So what is happening? Okay, because of this radiation, this function of the cortisol gets disturbed and our immune system gets disturbed. Okay. Then there is a lymphatic fluid. This is very important again, and this is again how the Agnihotra helps in improving the lymphatic system. We'll see. Okay, the lymphatic fluid is a transport the lymphocytes and the antibodies
which are continuously patrolling to the body, okay, ready to fight and destroy the foreign cells, such as bacteria versus cancer cells. So the geopathic stress has a strong effect on the correct functioning of the lymphatic systems. If the lymphatic system is not healthy, it is unable to destroy the foreign cells and thus enabling the cancer cells to grow and multiply. In other words, the whole immune system is weakened. Okay. Another thing is that assimilation of the nutrients from the intestines into the lymph and the blood stream depends on the polarizations. Keep it in mind, polarization of the electrical charges. So polarization affects the lymphatic systems, right? So one side of the cell member is a positive charge and other side is a negative charge. Okay. So nutrients are transported from the intestine to the lymph and the bloodstream when the positive charges are allowed to re-enter the cell, right? So geopathic stress disturbs this cells activity. This disturbs this polarity. Okay. And the geopathic stress are traditionally referred to the positive ion fields and created by the noxious frequency from the underground flowing. A geopathic stress is imbalance of the positive ion field. I will repeat. Okay, geopathic. Sometimes हमें ऐसा लगता है कि नहीं positive ion ज़्यादा है तो it's very good. It's a positive, right? Which is not a positive. It's a negative, right? For the health. Okay, but geopathic stress affect this, and the positive ions lead to the unhealthy cell growth, which compromise the body immune systems, leading to the varying elements of such as tumors, cancer, leukemia on the extreme side. So we need to live in a negative ion balance, which maintains the healthy oxygen levels. Keep it in mind, okay? So we need to live in a negative ion balance, which maintains the healthy oxygen levels, promoting the healthy cell growth, healthy states of mind, and the overwhelming or overall well-being. Okay. Now, how it is linked with the Agnihotra? Okay. So Agnihotra creates a more and more positive ion and more negative ions. Okay, Agnihotra creates more negative ions. For this, I brought this passionately. This is a ion counter, right? This I brought it from the US with $600. The amount which I reserved for certain things. Okay, earlier that I was passionate. अगर कोई मेरा relatives आता है तो US I used to say, okay, मेरे लिए घड़ी लेके आना, मैं पैसे ट्रांसफर करूँगा. लेकिन उस साल मुझे लगा कि ये घड़ी वड़ी कुछ काम का नहीं है, right? They're already having so many घड़ीज. So forget about this घड़ीज. बहुत illusion वाला है, इसके कुछ होने वाला नहीं, because that year my all things changed. Okay, so ये सब माया मोह माया है. So मोह माया में नहीं पड़ते हैं. So let's work on the serious things. So I brought this. जो मैंने उसके लिए funds reserve किया था, I spent lot $1,000 मैंने खर्चा किया अलग अलग instruments के ऊपर, but it worked. Okay, so उसी समय मैंने 4 साल पहले घर में अग्निहोत्र चालू किया था. I wanted to check because अग्निहोत्र, because मैंने research में पढ़ा था, research papers में पढ़ा था, because of the अग्निहोत्र it increased the negative ions. But researchers कैसे है ना, एक कहावत है मराठी में है, बाप दाखव ना तो श्राद्ध कर, पिताजी दिखाओ ने तो श्राद्ध कर. ये रिसर्च वाला का एटीट्यूड होता है, राइट? तो बीइंग हार्डकोर रिसर्चर मुझे कुछ करना है, मुझे नहीं तो मैं कैसे आपके सामने बोलूंगा, राइट? सो आई ब्रॉट दिस थिंग. आई हैव चेक्ड बिकॉज ऑफ थिंग्स, बिकॉज घर पे रोज ही चल रहा था. मॉर्निंग टाइम मैंने देखा अग्निहोत्र करने से पहले, अग्निहोत्र करने के बाद तो नेगेटिव आयंस बढ़े. तो राइट, सो जहाँ पे अग्निहोत्र हो रहा है, तो जैसे कि शालिनी जी ने बताया कि जहाँ पे अग्निहोत्र होता है वहाँ पे हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस काफी बढ़ जाता है, राइट? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी वहाँ हो जाता है. जहाँ पे नेगेटिव आयंस बढ़ता है तो वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शनिंग बहुत अच्छा होता है. तो आपने को मालूम है लिम्फेटिक सिस्टम हाउ मच इज इम्पोर्टेंट, राइट? So these are the certain observations of the field, of the lines of the how the radiations are passing and affecting our health. So ये काफी studies है, तो कैसे अपार्टमेंट के स्टडीज करते हैं. These are the cross diagonal lines are the Curry lines, and these are the fault, geological fault है, and these are the water path है. Then if you see the extreme left bottom, वहाँ पे exactly bed है.
और वो बेड के वहां से पास ऑन हो रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा. इवन इफ द हॉल सिटिंग एरिया इज अफेक्टेड, so we can change the reorientation of the thing and mind it. This is again the same chart. The three pillars of the health is first one is a prana, that's oxygen, and then the diet and the acid alkali balance in the pH balance and the geopathic stress. So way forward, first अगर हमें अभी आपकी काफी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसका इलाज क्या है, राइट? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ये अपना अग्निहोत्र करो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा. फर्स्ट मैंने जब स्टडी चालू किया था जियोपैथिक स्ट्रेस से, मैंने पहले बोलता था कि relocate the bed, okay, then provide the insulation sheets. There are certain insulation sheets which prevents the movement of the prevents the uplift movement of the radiation. Then the cosmic energy, अग्निहोत्र मुझे काफी रिसर्च करने के बाद पता चला it's a very good thing to reduce the impact of the geopathic stress. क्योंकि कैसा है ना, देखिए कि हम ऐसा नहीं होता कि क्योंकि हम काफी छोटे छोटे घर है कि नॉट नेसेसरी वी कैन रिलोकेट, घर भी बदल नहीं सकते क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है, बेड का डायरेक्शन भी नहीं कर चेंज कर सकते क्योंकि उतनी जगह भी नहीं है, राइट? रेडिएशंस है, ऐसे भी नहीं है कि हमारे पास इंसुलेशन सीट्स अफोर्ड कर सकते हैं. तो उस केस में क्या है, तो मैंने सोचा कि अरे उस केस में तो अग्निहोत्र है, अगर सुबह शाम अगर करते हैं तो अच्छे खासे नेगेटिव आयंस मिलते हैं, तो बेटर है ना कि कहाँ कहाँ हम शीट्स डालेंगे, राइट? सो ये करने से, क्योंकि कैसा होता है ना, हम खाली बेड की जगह पे शीट्स डाल सकते हैं क्योंकि नाइट में काफी रेडिएशंस आते हैं. सो इनफैक्ट रात में more and more cell developments happens, but if in case of the geopathic stress the cells development gets affected, okay, but if Agnihotra is there so uska effect kam ho jata hai. So negative ion generating devices, abhi kya hai na ki there are certain devices, there are instruments available in the market which generate the negative ions, okay, wo bhi maine leke aaya घर पे to check the things, okay, but Agnihotra itna traditional se hai to kyun hum uske upar dependent rahe, right? So then the crystals are there. In fact, in 2014, I think so. Yeah, 2014, the PW Central Public Works Department has issued a guidelines that this study should be carried out while constructing the new residence. So this is kind of the study we do carry out. So again, the same thing, the passion that the instrument, if you see the right hand, I've done the research on that particular instrument. Very few people use that particular instrument. It is called as a proton magnetometer. We do check the gamma rays, okay, which is coming from the earth, and based on the numbers of the gamma rays, we say, okay, this is a affected area. On the left hand side, there is of course, the picture is not much clear. There is a liquor antenna. With the help of the liquor antenna, we do check the location of the geopathic stress. Okay, this is again field photos from the field. Then somewhere in the presentation I mentioned that when there is a geopathic stress lines passes through the road, there are more and more accidents happening. So in fact the soil properties are changing because of the geopathic stress. Okay, so this is a very good research carried out by Pune. If you Google up the Pune and the geopathic stress, you will get a lot of literature. So these are the site planning. How we do the plan, we identify the north-south directions and water path, tectonic fault, and then accordingly we do the plannings. Okay, this is Shuddha Prashi, and if you build with a certain degrees, and if you want a monetary benefit, yes, you can have a certain degrees inclination. The site planning, this is a for one particular site. It's an advantage, you know, if you provide the protection at the ground level, it gives the protection for the total building, right? Then Agnihotra, this we are seeing the demonstration. Okay, last few slides not take much time, but so people who live in the geopathic stress zones are highly polluted areas. Sometimes, you know, and areas experience in increase because of जहाँ पे geopathic stress होता है, the body natural equilibrium is get disturbed, right? तो जब मैंने रिसर्च कर रहा था अग्निहोत्र पे, of course it's a 7,500 years old, right? तो पता चला कि अरे वहाँ पे जंगल्स में ऐसा क्या होता है कि कौन सी पोल्यूशन है
कि जिसके लिए वो अग्निहोत्र कर रहा है, तो पता चला 2 चीज के लिए अग्निहोत्र कर रहा है। ओके, फर्स्ट जितना कुछ भी अगर नॉमिनल पोल्यूशन है वो निकालने के लिए, एंड माइंड इट मुंबई में मेट्रो सिटीज में इतना पोल्यूशन है तो कितना मात्रा में अग्निहोत्र लगेगा टू रिड्यूस दैट पोल्यूशन, ओके, टू काउंटर दैट पोल्यूशन। सेकंड थिंग इज दैट द बॉडी ऑसिलेशन, क्योंकि अगर मुझे ध्यान करना है, साधना करना है, राइट, सो बॉडी ऑसिलेशंस है, द बॉडी कैसे कि उनको मालूम था कि बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग द बॉडी ऑसिलेशन गेट्स डिस्टर्ब, राइट, बट बिकॉज ऑफ द अग्निहोत्र the body equilibrium get balance, okay, that's a good advantage of the Agnihotra, okay, and so it's scientifically all scientifically proved, okay, so that's why अगर आप कौन से भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे हवन कुंड है, तो हवन कुंड इज नथिंग बट अ स्कैनर, राइट, तो आपकी ऑटोमेटिकली जहाँ पे आप वैसे ही जाते हैं तो हवन कुंड में मॉर्निंग में भी वहां पे अग्निहोत्र होता रहेगा, तो जैसे कि आप वहां से जाते हैं तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी इज गेटिंग स्कैन, योर बॉडी नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गेट, अगर कुछ डिस्टॉर्टेड है तो नेचुरली बैलेंस हो रहा है, एंड देन यू आर एंटरिंग टू द टेंपल, राइट, तो क्या सिस्टम है देखिए, टेंपल में जाते से ही हवन कुंड है, हवन कुंड से जाते से आपकी बॉडी स्कैन हो रही है, आगे जा रहे हैं आप पूरा मेंटली बॉडी भी perfect हो रहा है, and then you take the darshan of the god, okay, so Agnihotra again second is Agnihotra, this is the entropy of the human body by increasing the intake of the prana, so instant flow of the prana through the chakra systems without any blockades generates the sufficient wave activity from the alpha to the gamma waves in the brain to maintain the good health, right, the smoke of the Agnihotra fire shows the higher content of the negative ions. This is already there was any research. Then I also checked with this instrument. So it generates a more negative ions. And by introducing the extra oxygen to the bloodstream, cancer cells become 3 times more sensitive to the treatment like radiotherapy. Keep it in mind. Keep it in mind. What we have seen earlier, because of the geopathic stress, there are more possibility of the cancer. Why the more possibility of the cancer? Because the immune system is getting disturbed. Okay, so basically your immune system is getting disturbed. That's why you are most prone to the cancer. But because of the this Agnihotra, what is happening? There is the extra oxygen in the blood system. The cancer cells become 3 times more sensitive to the treatment like a radiotherapy. So everyone cannot afford the radiotherapy, and radiotherapy is too costly and too मतलब काफी तकलीफ होती है जो पेशेंट्स लेते हैं, राइट, सो पहले से अगर हम ये करते तो नौबत ही नहीं आएगी, राइट, सो रिसर्च आल्सो सजेस्ट दैट it can improve the delivery of the chemotherapy drugs to the tumor and increase the body stem cell. तो जहाँ पे मैं विजिट करता हूँ, जहाँ पे अगर कोई कैंसर पेशेंट्स है तो मैं इनको बकायदा बोलता हूँ कि नहीं देखिए, आपके साथ आज जो ट्रीटमेंट चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अग्निहोत्र कर लीजिए, तो कीमो को जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहेगा और उनकी हीलिंग भी अच्छी रहेगी, क्योंकि कीमो में काफी तकलीफ होती है लोगों को, ओके। Then Agnihotra fumes include the lalostanol ether, I don't know, then which was recently reported to have an inhibitory effect against the breast cancer mediated bone destruction by blocking the vicious cycle between the cancer cells. So osteoblasts and the osteoclasts and the element B element, which was reported to have anti-lung cancer activity, was found to reduce the side effects of the chemotherapy. Okay, so in a nutshell, it reduces the chemotherapy. Then the Dr. Hopkins of the France, the smoke is he studied the smoke produced by the burning of the mixture of the ghee kills the germs of the certain disease. Inhaling it from some distance induces the secretion from the certain glands related to the windpipe that fill our heart and mind with a relaxation. So the fumes that are liberated during the combustion of the ghee help to protect the respiratory systems and facilitate the removal of the blood clots and the bacterial infections in the nasal passage, lungs, and the veins. Okay, and the Americans psychologist Barry Lather, who conducted extensive research in Agnihotra in Pune, he said that Agnihotra has a distinctive effect on the environment and a healing effect on the human mind. Okay, so
this is all. So we want to have a geopathic stress-free homes, and if you want to have geopathic stress-free homes, then one of the best remedial measure is अग्निहोत्रा, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है. माधव आश्रम से वापस उसको रिवाइव हो रहा है, एंड कई जगह पे अभी हो रहा है. That's a good sign. So thank you very much for your kind attentions, and the floor is now open. आपकी जो भी questions है, the queries है, जहां तक मुझे मालूम होगा I will answer. अगर नहीं होता है तो let's see. Okay. So over to Pooja ji. Pooja madam, thanks a lot. I hope now the term geopathic stress is clear to everyone. Absolutely clear. Absolutely clear. Thank you very much. Thank you. Acha, one question, though we have others also, like we talked of geopathic stress is something below the earth, which is not visible to us. And we are doing Agnihotra above the earth where we are living, right? So, though I could understand it helps in producing more negative ions, which helps us to breathe more. So how come like I can't found a connection between geopathic stress, which is down, and Agnihotra, which is we are performing up? Like वो connection I couldn't make out. क्या है वो? Okay. देखिए जैसे indirect impact क्या है कि जैसे कि because of the radiation there are more and more positive ions, right? ये इम्पैक्ट हो गया जियोपैथिक स्ट्रेस का. जब आप अग्निहोत्र करते हैं तो यू जनरेट द मोर नेगेटिव आयंस, तो उसका वो बैलेंस हो जाता है. दिस इज अ इनडायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शंस. ओके, आपको दिखाई नहीं देता है रेडिएशन का इम्पैक्ट अनलेस एंड अनटिल उसको आपके हेल्थ के ऊपर कुछ होता है, राइट? Okay. So how to measure, like as a layman, how to measure geopathic stress at homes, at the buildings where we are? एक सिंपल सा है, जैसे कि मुझे एक फोन आया था. देखिए उस ऐसा है कि मतलब मेरा फ्रेंड है, इज अ प्रिंसिपल इन कॉलेज, कि उसने बोला कि नहीं उस बिल्डिंग के काफी लाइन में पूरा एक विंग ही इफेक्टेड है. मतलब दिस इज इनडायरेक्ट इंडिकेशंस कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है. मतलब पूरा एक विंग ही हेल्थ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इंडिकेशंस है ऐसे. बट टू चेक देयर आर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इज रिक्वायर्ड टू चेक. उसको कैसे चेक करना है. There are 2-3 methods to check the thing. The first is the simplest is a dowsing, क्योंकि पहले जमाने में dowsing करते थे, and there are some certain dowsing rods are also available. जो diviners है, जो water divining वाले हैं, तो they use the dowsing rods. Okay, so they find out the dowsing rods से कहाँ पे water path है. So water path जहाँ पे है वहाँ पे उसके ऊपर there is a source for the geopathic stress. It's a बहुत simple thing है. बाकी instruments है, but simple traditional way to find the water path. Second, we do check with pendulums, but pendulums depends on the person to person. कैसे है. So there are methods to check the. Can we check it with Rudraksh Mala or something like that? Is it possible? With the Rudraksha Mala, and if you know the dowsing. Have you ever done the dowsing with the Rudraksha? No. I tried. Actually, all the things you covered na पिछले 1.5-2 साल में I came across all the things and many of my questions are answered. Recently, I learned Vastu Shastra for 3 or 4 months just because of this point, geopathic stress. What is it and how it can be encountered? नहीं क्या है ना, I don't know from where you have studied geopathic stress, but for your information, या सबकी information के लिए मैं बताता हूँ. See, I'm a hardcore civil engineer, right? My basic qualification is civil engineer. I have studied the proper geology and even PhD in the water resources. So I know the geological thing. Those there is a very half knowledge which is in the field, right? So they don't know how these radiations are passing. Okay, so this, as you know, that it shoots up in the environment, it goes up like a laser beam, right?
So कोई लोग बोलते हैं कि कुछ लगाओ, बाजू में रखो, it will absorb the radiations. ऐसा है, ऐसे I want to warn you because अगर आपको पता है जियोपैथिक स्ट्रेस टर्म मालूम है, अभी आप ढूंढोगे नहीं मेरे को कुछ होता है तो किसी के you will go for the any expert and all, so he will suggest okay put some cells, okay put some cells, put something crystals, and crystals are good no doubt, but it has to be put on the places where there is a radiations, right? अगर आप बाजू में रखोगे, मैंने देखा है कई जगह पे रेडिएशन वाली जगह है, बाजू में कुछ सेल्स रखे, कुछ फलाना फलाना रखा है, और बोलते कि वो इट विल एब्सॉर्ब, नथिंग विल गेट एब्सॉर्ब, कुछ एब्सॉर्ब नहीं होता है। द कंसेप्ट ऊपर जाता है, जब तक आप उसको ब्लॉक नहीं करोगे तब तक वो आता ही रहेगा, राइट? सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू लर्न। No, it's not about, मतलब मेरे बड़े सारे questions थे about वास्तु. I came to know some things and now I want one more question is there. How like things can help us? जैसे अभी मेरे पास भी अभी एक Geostress होता है ना, seat or pad, whatever you say. Recently I got it from somewhere. It has an impact. वो I can feel. मतलब while sitting on that pad, you can feel the, what you call it, a serene kind of thing. But how it has an impact on such a powerful thing called Earth? मतलब Earth का impact जितना होता होगा उसको कैसे हम चीजों से कर सकते? बताते। देखिए क्या है ना, lot of research has been done on this field, right? जैसे कि जब radiations आते हैं ना, we do check the what is the magnitude of the radiations, right? ऐसे instruments हैं, instruments जैसे कि आपको पता चला we can actually measure, right? So काफी उसके ऊपर research हो गया, तो which are the materials to be laid, अलग अलग materials का radiations के खिलाफ वो कितना प्रोटेक्ट करेगा, उसके स्टडीज किए गए हैं। अकॉर्डिंगली वी डू सिलेक्ट द मटेरियल्स कि ये बिछाओ और उसके फिर उसके नीचे से नहीं आएगा ऊपर रेडिएशंस। सो व्हाटएवर यू हैव प्रोक्योर्ड दैट द शीट्स दैट मस्ट बी उतने रहेंगे क्योंकQ ऊपर नहीं आता रहेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, राइट? या बट कैसा है ना कि सी एवरीवन कांट अफोर्ड, ऐसा है, there is a cost, right? Cost, and सबको मालूम भी नहीं है कि अरे उसका क्या होगा। और दूसरी बात ठीक है, आपके अपने बैठने का जगह तो प्रोटेक्ट किया, राइट? लेकिन ऐसे भी काफी दूसरी जगह रहेंगे, जैसे आप घूमते रहेंगे तो वहां पे भी है रेडिएशन, आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे ना? जैसे कि मैं कई जगह पे जाता हूँ कि ठीक है बेड में तो प्रोटेक्शन किया, लेकिन किचन के यहाँ पे है, कहाँ आप डालोगे शीट्स, कहाँ पैसा खर्च करोगे? तो सिंपल मैं बताता हूँ, ये करो, ज्यादा सेकंड मैं बताता हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले लो, गिव द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्स, ओके? बट अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन आई प्रेजेंटेड टू वन ऑफ द गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, सो डायरेक्टर आस्क्ड मी, ओके विनय यू आर सेइंग लाइक दिस, ओके अगर मैंने कुछ नहीं डालूंगा और इफ आई मेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, मुझे कुछ होता नहीं है, तो क्या होगा? Then I said, sir, you are right, but ऐसे strong will power सबकी होनी चाहिए ना, अगर सबकी नहीं होती है तो तकलीफ है। अच्छा विनय जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लाइक we invited someone to check the Geostress, तो हमारे घर में 2 पॉइंट्स मिले, उन 2 पॉइंट्स पे I could not sit, मतलब बहुत टाइम से ऐसा था, वहाँ सोफा पड़ा था मेरा पर्सनली, I don't know what is the link, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है या कुछ है, आई कुड नॉट सिट देयर, वहां मैं 5 मिनट भी नहीं बैठी होंगी पूरे टाइम स्पैन में। और इन माय बेडरूम देयर इज अ स्मॉल मंदिर, वी यूज्ड टू डू अग्निहोत्रा सिंस लाइक बहुत साल से कर रहे हैं हम, तो मे बी उस वजह से वो इम्पैक्ट उतना नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ बिग थिंग जैसा आपने शेयर किया, एंड यू हैव लॉट ऑफ रिसर्च। बहुत मजा आया आज की वर्कशॉप में because it can help. We'll put this on YouTube also so that it can help many people. I have seen many people suffering, as you told ना कि घर शिफ्ट किया and they started having, अब इतने बड़े अच्छे घरों में रह के लोग they are so unwell. So I have seen जैसे आपने जिक्र किया कि बड़े अच्छे घर दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना आई एम हेल्पलेस, मतलब बेसमेंट्स है, सब कुछ है, अच्छा है, बड़ा अपार्टमेंट्स है, बट एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। क्योंकि देखिए एग्जांपल ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है ना, सी जब रेडिएशन ऊपर आते हैं, सो
7.86 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी है, राइट, ऐसा उसकी फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो अपने हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करते, राइट। बट टेक एग्जांपल ऑफ द स्प्रिंग, ओके, वो 7.86 हर्ट्ज की है फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसको आप जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो स्प्रिंग क्या होता है, उसका डिस्टर्ब हो गया, तो सिमिलरली इम्पैक्ट होता है यहाँ पे, राइट। जब घर बनते हैं तो हम वास्तव में वो अच्छी खासी रेजोनेंस या फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, एंड दैट डिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी इज अफेक्टिंग हेल्थ। इसलिए जब मुझे देखता हूँ हाई राइज टॉवर्स, मुझे पिटी लगता है कि इतने बड़े बड़े पैसे देके जहाँ पे वहां पे रहते हैं, बट health, I don't know what will happen to their health. Yeah. And another thing is that you must have noticed, because you're working on the same field, try to check the cosmic energy, right? कुछ जगह पे ऐसे होती है, we do also check the cosmic energy. So ऐसी जगह पे होती है कि वहाँ पे automatically healing energy होती है, और some places there is a charging kind of energy. कुछ जगह पे देखिए, आप बैठने से you will get charge, आप बैठने से कुछ अच्छा फील होता है, और कभी कभी उस पर्टिकुलर जगह पे आप सोएंगे नहीं तो बैठेंगे ना, तो वहां पे हीलिंग एनर्जी, आपका काफी अच्छी हीलिंग एनर्जी होती है। सो व्हाट वी डू व्हेन वी विजिट दिस ऐसे कुछ जगह पे देखे, देन आई डू सर्च वैसे काइंड चार्जिंग वाली एनर्जी, तो चार्जिंग वाले तो हम बताते हैं कि देखिए, अगर आप ज्यादा परेशान है या आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज वहां पे ना वो चार्जिंग वाले एनर्जी पे बैठ दीजिए। एक मिनट, कोई आया है, जस्ट गिव मी मिनट। Yes, everyone, I would like to share कि डॉक्टर विनय से ये सब अभी वर्षा जी का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन गेट इन टच विद विनय जी। मैं एक बार इन्हीं से बात करती हूँ। विनय जी, many questions are there in chat. If you can answer, first and foremost is how people can reach you out. Okay, you can take my number. My email ID is vinaynikam@live.com. I'll share on the chat. I will type here. It's a Vinaynikam @live.com. Okay. Then my. Please share your contact number. Yes, also. sure. 9594000648. Right. So this is my number. So you can have a. And I think this knowledge can help many people. पता है लोग कहाँ से किस चीज का इलाज करा रहे होते हैं। ना. Namrata ji and ऐसा Dr. लगा कि Vinay. मतलब you are more of a Meenakshi ji, doctor. Meenakshi ji wants to ask a question. I think she has raised. I think I interrupted somebody. Sorry for that. Dr. Vinay and Namrata, this is something for both of you. Like Dr. Vinay mentioned that in ancient times they used to let cows graze in a field. So there are indicators that these stress lines, they affect life forms. But in modern times, in day-to-day urban scenario, is there something that is very easily observant rather than just observing human beings and cancers and ailments, like effect on like lack of birds in an area, for example, or certain animals, or in general, the feel of a society or a locality? Is there any specific indications that come if there are any geopathic stress areas on plants, on vegetation, on birds or animals, or any life forms? What Meenakshi is asking is like, I heard somewhere where like pigeons reside, it's not good, like it shows geopathic stress. Is it so? Or can we have some other kind of indications like this? Yeah, as far as the ants are concerned, if there are much more ants, it seems they reside in a very positive ants portion. Okay, it means there are the geopathic stress. This is what a very old people, old stage area, old era they used to do. I would like to share my experience. The point in my home, like it's outside, like it's a balcony area. वहाँ पे बिल्ली बैठती है बहुत frequently. And Perfect cats का observation. बैठना मतलब वहाँ पे geostress है. Perfect observation. Even dogs लोग भी जहाँ पे है ना, वो पहले काफी ढूंढते हैं जगह, then
प्रॉपर सेफ जगह पे ही वो थे। ऐसे मैंने लास्ट वीक आई वाज इन कोल्हापुर, सो आई वाज जस्ट चेकिंग द जियोपैथिक स्ट्रेस एरियाज एंड ऑल। तो क्यूरियोसिटी से उन्होंने लड़की ने पूछा कि नहीं उनका हालात वेरी रिसेंटली उनका डॉग एक्सपायर्ड हो गया, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे देख लीजिए कहा वहाँ पे है क्या, तो जहाँ पे एक्सपायर्ड हुआ वहाँ पे तो रेडिएशन वाला नहीं था, क्योंकि उसने भी ऐसे एंड में ऐसी जगह ढूंढ ली कि जो उसको हेल्थ के लिए तकलीफ ना हो जाए। ओके, सो ही हैज ऑटोमेटिकली सर्च। देन अनदर थिंग इज दैट वेरी सिंपल एग्जांपल, जहाँ पे एक ऐसे भी एक ऑब्जर्वेशन था, एक ने किया था कि मतलब एक जगह पे घर पे गया था, उन्होंने प्लांट्स काफी लगाए थे और एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे प्लांट्स आते ही नहीं थे बालकनीज में। तो उनका जब मैंने चेक किया तो जहाँ पे रेडिएशन वाले जगह है वहाँ पे प्लांट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जहाँ पे नॉन रेडिएशन वाले जगह है वहाँ पे अच्छे खासे प्लांट्स आ रहे थे। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। So we can conclude that it is like more of an observation. If keep our minds open, we can observe. Yeah, you can observe. Yeah. And anyway, ऐसा होता है ना कि I will share one example here. एक दो है। एक मेरे अंधेरी का जब मनीषा जहाँ पे रहती है उस अपार्टमेंट का ही है, तो वहाँ पे एक पूरी विंग दिस अफेक्टेड बाय द डायबिटीज। क्या एक कोइंसिडेंस नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे उनको है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे हो गया, फोर्थ फ्लोर पे हो गया, फिफ्थ, उसी लाइन में सबको डायबिटिक्स है। इज एनी, जब हम वास्तु शास्त्र में बोलते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये उसका एक्सटेंशन है, राइट। वास्तु के हिसाब से अगर भले अच्छा रहेगा सब कुछ, दैट्स एरिया इज गुड, सब अच्छा, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट। देन अनदर एक बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर से मुझे मुलाकात होगी, तो उन्होंने बोला कि उनके जहाँ पे दादर में अच्छे प्राइम लोकेशन पे एक पुराना घर था, वहां पे लाइन में सबको कैंसर है। वो किसी को रेंट भी नहीं देना चाहते, रेंट पे भी नहीं देना चाहते गलती से, क्योंकि दादर एरिया में काफी अच्छा रेंट मिलेगा। नहीं, अगर वहां पे ऑफिस के लिए किसी को रेंट दूंगा तो किसी को कुछ होगा, दैट इज माय थिंग, राइट। तो ऐसे पता चलता है थोड़ा सा ये करने के। बट अच्छा विनय जी, एज यू शेयर्ड विदिशा वास्तु जो होम्स होते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री, if we align our beds with the cardinal directions, then it's okay. Yeah, then it's okay. But having said that, if you are into that Hartman line, okay, आपको पता चला कि हार्टमैन लाइन 35 मीटर सेंटर टू सेंटर पे है, उसमें है तो आप अफेक्टेड है, उसके बीच में है तो आप यू आर फ्री। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसके बावजूद भी अगर जियोलॉजिकल फॉल्ट नीचे से जाता है तो यू कांट हेल्प। ओके, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशंस, राइट। लेकिन एक होगा एडवांटेज, उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कार्डिनल डायरेक्शंस की जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको काफी अच्छी मिलेगी। हेल्प दैट एडेड एडवांटेज यू हैव, बिकॉज मैंने अभी कहीं देखा है कि कहीं जगह पे, काफी जगह पे, अभी मेरा खुद का घर, दैट्स अ गुड डे इन अ गुड प्रॉपर, इसमें एक्सीडेंटली हो गया। मैंने आर्किटेक्ट को भी बोला कि थैंक्स अ लॉट, बिकॉज he constructed long back. Our complex is almost 20 years old, and we had a one conference on the geopathic stress के लिए मैंने organize की थी, not a conference but a small workshop, okay। तो वो भी आए थे, तो बोला कि thanks a lot कि आपने अच्छे तरह से बिल्डिंग बिठाया, okay। So it has a value addition, but having said that, ऐसे कम जगह पे मिलता है ना। अगर अर्बन एरिया में आपको जो प्लॉट इतना है उसमें बिल्डिंग बिठाना है तो आपका ऑप्शन ही नहीं है सेट बैक छोड़ के उसमें बिल्डिंग बिठाना, लेकिन आपको अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप वैसे बिठा सकते हैं। इट विल गेट अ वेरी 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 बेस्ट एडवांटेज, ओके। इसमें भी काफी है आगे जाके, दैट विल रिक्वायर अनदर सेशंस, राइट। we do call it as a, there is a ayadi vastu करके है, that's a different thing, but these are the very basics of the ayadi vastu what I say, because very we would old like to have your sessions more sessions, है ना। बड़ा मजा आया session. Thanks a lot, it's my pleasure. Learned a lot, and many good comments are there. Many people are like amazed to see such knowledge, and many people are like कि Hindu rituals का क्या scientific aspect है, actually this is the time to share, क्योंकि unknowingly people, जैसा आपने बोला कि लोग घर पे अगर नहीं भी करते थे, they used to go to मंदिर जहाँ पे रेगुलर हो रहा है, so they are like getting those vibes. So now need of the hour is to do Agnihotra and
align yourself with the nature. Exactly. I have been to the one minority college. Okay. तो वहाँ पे तो even now it's in fact a minority college. वहाँ पे काफी ये है, we can't openly say कि काफी restrictions थे वहाँ पे, even the faculties नहीं हमारा minority college है, तो काफी वहाँ पे है. तो अभी मुझे presentation तो देना है, right? I have to put my words forward कि क्या है. तो मैंने I have not said the Agnihotra over there. Okay. तो जस्ट नाम चेंज किया मैंने, मैजिक स्मोक करके उसको प्रमोट किया. Fire ritual, magic smoke. Actually, other communities are also doing it in other ways, na? I know one very Parsis में भी ऐसा होता है. Parsi just मैंने आपको बोलने I वाला have researched था. also. they in fact वो फायर को ही प्रेयर करते हैं ना. हाँ. So good. So any specific? Energy, this is Mandar here. Able to hear me? Yeah. Today is Vinayji's son's birthday. He has to go for the birthday celebration also. Yes, they are waiting now. They are waiting for him. Cake. So we should thank him now and let him go. मनीषा को मैंने बोला था कि नहीं, पहले कहा कि 8 से 9, मैं बोला 8 से 9 नहीं तो मुझे तकलीफ हो जाएगा. तो अभी केक प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन. So you are all most welcome as a virtual cake के लिए. So for the virtual celebrations, yeah. All the blessings to your thanks a lot for your kind blessings, because now it's required, the blessings, the words, the positive words will help a lot. Yes. It help a lot. And again, for your information, when I visit most of the time, when I do visit those places, I do a very small एक कर लेता हूँ एग्जाम्पल उनको बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल कर लेता हूँ उनको. ओके, दिस इज वेरी बेसिकली लिंक विद डाउजिंग का है एंड हाउ द वर्ड्स अफेक्ट, राइट. सो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, अगर कोई मुझे वो पानी लेके आता है, नहीं तो वहां पे बोलता हूँ ठीक है फ्रूट्स लेके आओ, नहीं तो कुछ भी लेके आओ. सो आई डू चेक द व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट फ्रूट. ओके, वाटर व्हाटएवर जो कुछ है. तो पानी लेके आते हैं, ठीक है, ये ग्लास है उसमें पानी है, ठीक है. तो आई डू चेक इसकी एनर्जी कितनी, पानी की एनर्जी, ऑफ कोर्स पानी की एनर्जी कभी पता चलता है कि 40% एनर्जी, 50%, व्हाटएवर द एनर्जी, राइट. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, अब एक मंत्र या कुछ भी अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स आप करो. हाँ, तो उनको बोलते रख दो हाथ, इसके ऊपर मंत्र बोलो, कुछ भी बोलो, ओम करो या अच्छा पानी 3 बार बोलो, ठीक है. एंड माइंड इट दैट वर्ड्स डायरेक्टली इफेक्ट द वाटर इन द ग्लास. ओके, तो मैंने देखा है, मैंने उनको डायरेक्ट बताता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन में, नहीं देखिए इसकी वजह से 100% पॉजिटिव एनर्जी हो गई, राइट. देन उसके बाद मैं उनको बोलता है कि ठीक है, अभी वाटर इज 100% पॉजिटिव हो गया, राइट. अभी आप बोलो दिस इज द वेस्ट वाटर, राइट. ये पानी गंदा है, इससे हेल्थ को तकलीफ होगी, राइट. मैंने अभी बोला है अभी, तो उसके बाद उसका वापस चेक कर लेता हूँ कि कितना एनर्जी है. सो एनर्जी बिकम्स 0 और 10%. तो ये जो वर्ड्स है ना, तो वर्ड्स मैटर्स अ लॉट. तो थैंक्स अ लॉट फॉर नाइस वर्ड्स. अभी धीरेन जी का क्वेश्चन था, किसी का क्वेश्चन था, धीरेन जी इज फ्रॉम गुड़गांव. उनका क्वेश्चन था कि हाउ मंत्रास वर्क. So I think this is the answer for that. This is the answer. So nice. Thank you so much. This is the answer for that. Thank you very much. So much. Thank you. And Thank you. everyone, you can see such sessions on MITI Connect. We have a YouTube channel also, and we have a website also. You can fill the Google form so that you can be reached out every time. We have like such sessions, and our next session, actually this session is extended. So our next session is today only at 7 to 8. It's about rainwater harvesting. Everyone who wants to join, they can join. Again, this Zoom meeting only. Okay. We'll be back within next 10 minutes. We can again sit here. We are celebrating this environment day in like amazingly. Bada maza aa raha hai. Yes. Thank you, Vinayji. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah, bye. Please continue with the celebrations and a lot of blessings thanks, for the young boy. Yes. Okay. Thank you. Thank you all.